Hello everyone, this is the sixth video of differential equation. Previous video रे आम linear differential equation and its solution discussion करथिले and linear differential equation solution केमिति बाहर करियो तार working rule रे discussion करथिले. So देखो मु आउ थरे linear differential equation विषय रे डिस्कस कर दोची. Linear differential equation, that means linear in y. Linear in y रे हमर differential equation रहउतिला dy by dx plus p of x into y is equal to q of x, and this is the standard form of a linear differential equation, and आमे ताको रिप्रेजेंट करथिले इक्वेशन 1 ने. आफ्टर देन आमे y रो कोएफिशिएंट एठी जहां थिला ताको रिप्रेजेंट करथिले p of x, and by using this p of x we get the integrating factor whose formula is e to the power integration of p of x dx. Then आम इंटीग्रेशन फैक्टर पाई सारा परे ए इंटीग्रेशन फैक्टर को आम मल्टीप्लाई करथिले इक्वेशन 1 ने. सो इक्वेशन 1 ने मल्टीप्लाई करि सारा परे we get the left hand side be derivative of or d by dx of the integrating factor into dependent variability हमर अछि y, and that is equal to right hand side of the integrating factor into q of x. Then आमे variable separation करथिले, that means a dx को नउतले first right hand side को, then both side integration करके आमे general solution पाउतले. Similarly linear in x, similarly linear in x, linear in x, linear in x रे हमर differential equation आस्थिला dx by dy plus p of y into x, that is equal to q of y. एठी भी हमर सॉल्यूशन सेम रहउतिला. This is the general form of a linear differential in x. Then we find the value of a p of y. P of y means x ro coefficient. After then we find the integrating factor, that is equal to e to the power integration of p of y into dy. Then integrating factor पाई साला परे integrating factor को हमें multiply करथिले equation 1 ने, so that the left hand side can be written as the derivative of a integrating factor into x. Then variable separation करके हमें general solution पाउथिले. So linear differential equation of data form, one is linear in y, other is linear in x. सो तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन देखला परे तुम फास्ट ताकू चेक करिवो सी तुमरा लिनियर इन y रे रहिबो dy by dx फॉर्म रे और dx by dy फॉर्म रे रहिबो. ताकू चेक करिया पई कोन करिवो, एठी तुमरा डिपेंडेंट वेरिएबल हला y, सो दैट चेक करिवो तुमरा y टर्म ओनली गोटे थिबो आ तार हाईएस्ट पावर थिबो केते 1. सिमिलरली लिनियर इन x रहे पई कंडीशन कोन दरकार ना तुमरा dx by dy फॉर्म रे रहिया पई कंडीशन दरकार तुमरा एठी डिपेंडेंट वेरिएबल हला x, सो x टर्म ओनली गोटे थिबो एंड तार पावर थिबो केते 1. देन तुमे जानि परिबो सेटा तुमरा dy by dx फॉर्म रे रहिबो ना dx by dy फॉर्म रे रहिबो. आफ्टर देन सेति की चेक कर साला परे देन ट्राई करिवो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करिया पई, कन्वर्ट कला परे तापर बाहर करिवो तार जनरल सॉल्यूशन. सो ये थिला तुमरा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन. देन वी डिस्कस बर्नौली इक्वेशन. सो फर्स्ट हमें देखिया व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन, देन बर्नौली इक्वेशन जनरल फॉर्म कोन, देन हाउ टू सॉल्व ए बर्नौली इक्वेशन. सो लेट्स सी बर्नौली इक्वेशन. So Bernoulli equation. The definition of the Bernoulli equation is the differential equation. The differential equation. The differential equation of the form
of the form dy by dx plus p into y is equal to q into y to the power n, where p and q are function of x only, or constants is called Bernoulli equation, सो एठी तुमर बर्नौली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गला dy by dx प्लस p into y is equal to q into y to the power n, where p and q are either function of x or any constant. So this is the standard form of Bernoulli equation. Now it is check करो तुम्हारा difference between Bernoulli equation and linear differential equation कौन. हमारा linear differential equation है right hand side only रहूतला function of x or constant, but एठी चेक करो तुम्हारा dependent variable है y, तार किसी extra power रहुची right hand side, that is y to the power n. So that this differential equation is not linear because एठी y रो पावर रहुची केते ना n, where condition एठी हम यूज करि परिबा where n is not equal to 1, और मैंने यदि n डा equal to 1 हे जिवो then p of y minus q of y equal to 0 हे गले y को तुमे कॉमन ने कि ताको वेरिएबल सेपरेशन करि परिबो. सो बर्नौली इक्वेशन ने हमर ओटे कंडीशन रहिबो n is not equal to 1. नाउ यार जनरल सॉल्यूशन बाहर करिया पई हमको फास्ट कौन करिया पड़िबो ना, एठी हमर बर्नौली इक्वेशन को फास्ट हम ट्राई करिवा रिड्यूस करिया पई लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को. सो देखो ताले हाउ टू रिड्यूस ए बर्नौली इक्वेशन टू ए linear differential equation or what is the solution of Bernoulli equation. So आमे डायरेक्ट करिबा solution. So let's see solution of Bernoulli equation. Solution of Bernoulli equation. Consider a Bernoulli equation. Consider a Bernoulli equation of the form dy by dx plus p into y is equal to q into y to the power n, where हमारे एक्सप्रेशन रहिबो where n is not equal to 1 and represented that equation by equation 1. That means this is the standard form of Bernoulli equation. and एटी चेक करो तुमरो स्टैंडर्ड फॉर्म रे dy by dx रो कोएफिशिएंट ऑलवेज केते रहउछि ना 1. सो जोटी भी तुमरो dy by dx रो कोएफिशिएंट 1 नथिबो ताकू 1 करिया पई dy by dx रो कोएफिशिएंट जहाँ थिबो ताकू बोथ साइड रे डिवाइड करिवो. आफ्टर देन यार सॉल्यूशन बाहर करिया पई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन 1 टू लिनियर फॉर्म. सो we have to reduce equation 1 to linear form. So linear form को कन्वर्ट करिया मीन्स आमर गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म कौन थिला. आमर गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म थिला dy by dx plus p into y is equal to q, where p and q are the function of x.
दैट मीन्स आमर राइट हैंड साइड ओनली रोला इधर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट बट एठी राइट हैंड साइड रे आमर क्यू पाखर गोटे एक्स्ट्रा टर्म रोचे y टू द पावर n। सो इक्वेशन 1 को लिनियर फॉर्म को कन्वर्ट करने हेले फास्ट डिवाइड y टू द पावर n both side of equation 1, both side of equation 1। so equation 1 no both side रे y रो पावर को जदि हमें डिवाइड कर दबा we get 1 divided by y to the power n into dy by dx plus p into y to the power 1 y divided by y to the power n, that means p into y to the power 1 minus n, that is equal to q। आफ्टर देन पुणी चेक कर तुम्हारा लिनियर फॉर्म रे आमर एठी ओनली रोहुतला y p ऑफ x और कांस्टेंट पाखरे मल्टीप्लाई हो रोहुतला ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल बट एठी y जगह रे कोन अछि ना एलिमेंटा y टू द पावर 1 माइनस n। सो दैट लिनियर फॉर्म को कन्वर्ट करिया पई नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट और पुट y to the power 1 minus n is equal to t। if y to the power 1 minus n is equal to t, then differentiate both the side with respect to x, we get derivative of y to the power 1 minus n is 1 minus n into y to the power minus n into dy by dx is equal to dt by dx is equal to dt by dx। and एटी सबु बेले मन रखिबो जेतेबेले तुमे बर्नौली इक्वेशन ने फास्ट y रो किछि पावर को डिवाइड कला परे एई जो फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करूचे सब्स्टिट्यूट करियो मीन्स से फंक्शन नो डेरिवेटिव टर्म कंपलसरी तार लेफ्ट रे थिबो, अदरवाइज तुमे जानिबो तुमरो सॉल्यूशन कोठी भूल अछि। लाइक देखो एठी जेमते हमें y टू द पावर 1 माइनस n एठी थिला हमें ताकू सब्स्टिट्यूट कले t रे। सो तार डेरिवेटिव रे देखो एठी हमें टर्म पाउचे y टू द पावर माइनस n मीन्स 1 डिवाइडेड बाय y टू द पावर n इनटू dy बाय dx जहा कि तुमरो ए लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पाइचे। ओके जहा कि तुमे ए डिफरेंशियल इक्वेशन ने पाइचो। सो दैट वी हैव टू फाइंड y टू द पावर n इनटू dy बाय dx। सो y to the power minus n means 1 divided by y to the power n into dy by dx and that is equal to 1 minus n को right hand side को नेला इला 1 divided by 1 minus n into dt by dx। then put all the value in this differential equation, we get 1 by y to the power into dy by dx लिखिबा 1 divided by 1 minus n into dt by dx plus p into y to the power 1 minus n is equal to पुट करिचे t। सो एठी तार वैल्यू t पुट कर दियो। सो p into t that is equal to right hand side only रहिला q। then next step एटी चेक कर एठी तुमरो डिपेंडेंट वेरिएबल है t एंड dt by dx रो पावर अच्छी 1 ऑल्सो t रो पावर अच्छी 1। सो ये तुम्हारा लिनियर फॉर्म को कन्वर्ट हो गला बट याको लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करिया पई हेले हमको dt by dx रो कोएफिशिएंट 1 रखिबा। सो एठी तुम्हारा टर्म अच्छी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। सो याको कैंसिल करिया पई बोथ साइड रे 1 minus n को मल्टीप्लाई कर दियो। सो मल्टीप्लाई 1 minus n बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट dt by dx plus 1 minus n into p into t that is equal to 1 minus n into q and represented it by equation 2। this is a linear differential equation, this is a linear differential equation in
टी आफ्टर देन आम गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाहर करने पाई जहाँ यूज करते रूल सेम रूल यूज करवा सेम रूल यूज करके आम सॉल्यूशन बाहर करवा एंड देन टी जगह आम तार रियल वैल्यू पुट कर देवा सो यूज द रूल्स और यूज द वर्किंग रूल्स to find the solution of a linear differential equation and then put the real value of t. T means y to the power 1 minus n to get the general solution so तुम्हारा स्टेप 1 है तुम्हारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ थी जदि से बर्नौली फॉर्म रे थिबो ताकू ट्राए करिवो रिड्यूस करिया पई को फॉर्म ना लिनियर फॉर्म को सो जोटा कि तुम एठी पाइछ देन एठी तुम सॉल्यूशन बाहर करिया पई एठी तुम्हारा टी रो कोएफिशिएंट जहाँ अछि दैट इज द फंक्शन ऑफ x ओके टी रो कोएफिशिएंट जहाँ अछि दिस इज द p ऑफ x देन एठू आम बाहर करवा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुणी अगेन मल्टीप्लाई करके एथिरे तार डेरिवेटिव तार सॉल्यूशन बाहर करवा सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड ऑन बर्नौली इक्वेशन सो एग्जांपल कले तुम आहुरी बेटर बुझी पारिबो लेट्स सी एग्जांपल 1 solve the differential equation dy by dx plus 1 by x into y is equal to y to the power 3. Solution is given differential equation is dy by dx plus 1 by x into y is equal to y to the power 3 and also ये चेक करो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म रे अच्छी सो पुट इट इक्वेशन 1 नाउ एठी तुम्हारा अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन रे तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y छोड़ी चेक करो एठी y रो पावर अच्छी 1 बट एठी y रो किछि एक्स्ट्रा पावर रही गला 3 सो यार सॉल्यूशन बाहर करिया पई आमे याकू ट्राई करिबा कन्वर्ट करिया पई लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को सो y रो पावर 1 को छाडी देला आ जहाँ थिबो ताकू बोथ साइड रे डिवाइड कर दियो सो डिवाइड y to the power 3 both side of equation 1 we get 1 divided by y to the power 3 into dy by dx plus 1 by x into y divided by y cube is 1 by y square that is equal to 1. Then next step फंक्शन ऑफ x पाखरे y रो टर्म जहाँ अच्छी ताकू रिप्रेजेंट करो t रे और सब्स्टिट्यूट करिबा t रे सो सब्स्टिट्यूट और पुट ये तुमर y टर्म रही गला 1 by y square सो सब्स्टिट्यूट 1 by y square is equal to t then differentiate both the side with respect to x we get 1 divided by y square 1 by y square derivative is minus 2 by y to the power 3 into dy by dx is equal to dt by dx but हमारे एठी ओनली टर्म दरकार 1 by y to the power 3 into dy by dx so 1 divided by y to the power 3 into dy by dx is equal to minus of 1 by 2 into dt by dx so ये माइनस 2 को लेकिन राइट हैंड साइड डिवाइड कर देले देन
ए सबू वैल्यू को आनी पुट कर दियो आमर ए इक्वेशन ने वी गेट 1 by yq into dy by dx is equal to minus 1 by 2 into dt by dx plus 1 by x into 1 by y square को पुट करिचे एठी t, so 1 by x into t that is equal to 1 and a linear differential equation को standard form रे लिखिबा, so dt by dx both side minus 2 multiply करा, ये जो minus 2 by x is into t that is equal to minus 2 and represented it by equation 2 and check kara this is a linear differential equation, this is a linear differential equation. After then we have to find the value of p of x, so here p of x is equal to minus 2 by x. Here p of x equal to minus 2 by x. Therefore, integrating factor is equal to e to the power integration of p of x into dx, that is equal to e to the power integration of minus 2 by x with respect to x, which is equal to e to the power minus 2 by x. Integration is minus 2 ln x from what, that is equal to e to the power या को हम लिख परिवा ln x to the power minus 2, e ln cancel होले value रहला x to the power minus 2, that is equal to 1 by x square. That means the integrating factor equal to हम पाई गले 1 by x square. Now multiply the integrating factor in equation 2. Multiply the integrating factor which equal to 1 by x square both side of equation 2, both side of equation 2 we get लेफ्ट हैंड साइड तुम ऑटोमेटिकली हो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इज टी, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू टी दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अच्छी माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर. दैट्स इम्प्लाई वेरिएबल सेपरेशन कले वी गेट डी ऑफ टी बाई एक्स स्क्वायर, that is equal to minus 2 divided by x square into dx. After then integrate both the side we get t by x square is equal to minus 2 is constant, integration of 1 by x square is minus 1 by x plus constant c, and that's imply t is equal to, that's imply t is equal to ये जो माइनस माइनस है प्लस, और 2 by x into x square is 2x plus c x square. Then the what is the real value of t? t means एठी हमें पुट करथिले t रो रियल वैल्यू हैला 1 by y square, so t जगह रे 1 by y square पुट कर दिले we get 1 by y square. 1 by y square is equal to 2x plus cx square, and this is the general solution of the given differential equation. This is the general solution of the given differential equation. Given differential equation where c be the arbitrary constant. So ये थिला हमारा फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू Bernoulli equation. Then next see another example, example 2. Solve the differential equation or solve x
into dy by dx plus y is equal to y square into log x. So the solution is, given differential equation is x into dy by dx plus y is equal to y square into log x. So ये फास्ट चेक करो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म रे नहीं, बिकॉज dy by dx रो कोफिशिएंट अछि x, so that divide both side x we get dy by dx plus 1 by x into y is equal to y square into log x divided by x. So here the dependent variable is y. So linear form रे रहे पई हमरो y रो हाईएस्ट पावर 1 रहे दरकार, बट एडी चेक कर राइट हैंड साइड तुम्हारा हाईएस्ट पावर अछि 2, so that this is a Bernoulli equation. नाउ आम बर्नौली इक्वेशन को ट्राए करिबा रिड्यूस करिया पई लिनियर फॉर्म को बाय डिवाइड y स्क्वायर बोथ द साइड. सो डिवाइड y स्क्वायर बोथ साइड we get 1 by y square into dy by dx plus 1 by x into y by y square is 1 by y, that is equal to right hand side only रहिला log x divided by x. So हमारा right hand side only convert हो गला function of x को. after then एठी तुम्हारो y रो टर्म जहाँ थिबो ताकू सब्स्टिट्यूट करिवो t रे. so substitute or put 1 by y is equal to t, then differentiate both the side we get derivative of 1 by y is minus 1 by y square into dy by dx is equal to dt by dx is equal to dt by dx. so एटी चेक करो 1 by y को t पुट कला परे चेक करो 1 by y square into dy by dx केते आसुची. so 1 by y square into dy by dx is equal to एगला केते ना minus dt by dx. now put all the values in the above differential equation we get, that's imply 1 by y square into dy by dx जारे put करिया minus of dt by dx, then plus 1 by x into value of 1 by y is t, which is equal to log x divided by x, and that's imply dt by dx रो कोफिशिएंट 1 दरकार, बट एठी अछि माइनस. सो माइनस टर्म टा को ऑल साइड मल्टीप्लाई कर देले वी गेट dt by dx minus of 1 by x into t, which is equal to minus of log x divided by x, and represented it by equation 1, and this is a linear differential equation. This is a linear differential equation. After then find the value of p of x. so here p of x is equal to the coefficient of t, that means minus 1 by x. Therefore the integrating factor is, that is equal to e to the power integration of p of x into dx, and which is equal to e to the power integration of p of x is minus 1 by x into dx, that is equal to e to the power minus 1 by x रा integration है minus of ln x, that is equal to e to the power minus ln x can be written as ln x to the power minus 1. so e to the power ln eliminate हो गले एटे रहिला x to the power minus 1, which is equal to 1 by x, so that the integrating factor is 1 by x. now integrating factor को multiply करिया कोथरे ना equation 1 ने. so multiply the integrating factor, that is equal to 1 by x
in equation 1 we get, so integrating factor को equation 1 ने multiply करिया means तुम्हारा left hand side convert हो गोटे perfect derivative को, so we get d by dx of integrating factor is 1 by x into dependent variable is t. So 1 by x into t that is equal to minus of right hand side थिला केते ना log x minus log x divided by x पुणी into करिबा 1 by x that means एला x square. After then variable separation करिबा, so t by x is equal to or d of t by x is equal to minus of x square को नहीं जाओ न्यूमरेटर को, सो ये है x to the power minus 2 into log x into dx. After then integrate both the side we get derivative and integration are inverse to each other, so we cancel a lateral t by x which is equal to minus of, now it is use करिया हमें by parts where log x is the first function, log x is the first function and x to the power minus 2 is the second function. So minus of log x into integration of x to the power minus 2, that is x to the power minus 1 divided by minus 1, then minus of integration of derivative of log x is 1 by x into integration of x to the power minus 1 is x to the power minus 1 divided by minus 1 dx, and that is equal to minus minus आइगला plus, that is equal to minus एठी अछि minus multiply कलेला plus x to the power minus 1 means 1 by x, so ये log x divided by x, then minus minus है plus एठी अछि minus, so ये minus integration of 1 by x into x to the power minus 1, that means 1 by x into 1 by x, so ये 1 divided by x square with respect to x, that is equal to log x divided by x, then minus of 1 by x square integration is plus 1 by x plus arbitrary constant c. So that's imply t is equal to, so एठी हम पाइले t by x is equal to log x by x plus 1 by x plus c. Now x को both side multiply कर देले we get t is equal to log x plus 1 plus c into x. Now put the real value of a t, the real value of a t is, आमे t substitute करतले 1 by y is equal to put करतले t, so t जगह तार रियल वैल्यू पुट कर दियो 1 by y, so 1 by y is equal to log x plus 1 plus cx, and this is the which is the general solution of the given differential equation, सो पिलाने ये थिला तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिनियर डिफरेंस बर्नौली, ये थिला तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौली इक्वेशन एंड तार वर्किंग रूल एंड सम एग्जांपल्स रिलेटेड बर्नौली इक्वेशन. ना मो तुमको किछि प्रैक्टिस क्वेश्चन दोउची, तुमे से सब प्रैक्टिस क्वेश्चन निजे प्रैक्टिस करिवो, देन प्रैक्टिस कले तुमे तार कॉन्सेप्ट को इजीली मन रखि परिवो. सो लेट्स सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. So these 4 questions are your practice question. ये चारिटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिवो, जदि कार किछि डाउट्स रहला देन यू कैन आस्क मी. ऑल्सो ए क्वेश्चन को जेतले तुम प्रैक्टिस करियो, तुम एठी तार कांसेप्ट को बारंबार यूज करिवो, सो तुम तार बर्नौली इक्वेशन रूल और वर्किंग रूल भी तुम इजीली मन रखि परिवो. सो वीडियो को केयरफुली देखिवो, जदि किछि डाउट्स रहइबो देन यू कैन कमेंट मी, और ऑल्सो तुम मते डायरेक्ट भी कॉल करिके पचारि परिबो.